Hello students, I am Amit Kumar Tiwari and in this session we will discuss about the topic session layer. Session layer is the fifth layer in OSI reference model. As you can see in the particular diagram that we are representing here, the session layer works as request and response system. It means, suppose this is a server system, and there is a client system. This is the client system and this is the server system. In client server architecture, we know that the client requests to a server and server process the request and then respond to a client. Here the working of session layer is also just similar as working of client and server system or request response system. Now we are going to discuss the some responsibilities of session layer. First one, the responsibility of session layer is authentication, authorization, session restoration, dialog control and synchronization. These are 5 basic responsibilities that are provided to session layer. First one, authentication. What do you mean by authentication? Suppose we have a web browser and using our web browser I am going to access a particular website which requires some authentication. Authentication, we can explain authentication using a diagram that a particular web page have a needs some login information like your user ID and password to access the remaining detail. Okay, we can see in this diagram. In case of authentication, when a client wants to access a web page after providing their credential, it means the server wants to know about you. There is a very simple question. Server wants to know who are you. Who are you? That means if your user credential are correct, that you are entered in form provided, then after successful login, what happened? After successful login, the server provides you some type of access to got the information that the particular server or particular web page have. Okay, so authentication is also, we can say that authentication is required to security purpose, so that anyone, that is an unauthorized person, should not be able to access your details. Okay, so in the authentication process, user provides their user ID and password, and if the user ID and password is correct, then he or she are able to access the information. Look, here I want to discuss an important point, that session layer is not a responsibility of operating system, or we can say the programming portion of session layer is not handled by the operating system, it is handled by the application. Okay, so it means like your data link layer, like your transport layer, like your network layer, these coding of these particular layers resides in the operating system.
while the coding of you can say session layer resides with the application. So it is not compulsory that each and every web page have authentication process. That's depend upon the application. For example, to access any particular website, we need not to access we need not to provide our user credential, while if we want to access our mail, then we must provide user credential, a correct user credential. Okay, so that is the first responsibility, and that is called as the authentication. Second one, authorization. Authorization means when you are authenticated means when your user details, user credential are correct, then server provides you some authority. That means what permission do you have? For example, in our Gmail, when we provide our login ID and password correctly, after that we are able to access our mails only, not other person's mail. It means the server provides you authority to access your mail only. Another example is, suppose we are using our college ERP. So after providing your user credential, user ID and password, you are able to access your details, your attendance, your marks. But if I am providing our user details, then I have the authority, I have the some special type of permissions, so that I can give attendance, I can give marks, I can give other assignment activities. Okay, so after authentication we need some type of authorization. Authorization, we can explain authorization as a set of privileges that a particular client have. Okay, so that is the another responsibility of the session layer, it is authorization. Second one, session restoration. Not second one, third one, session restoration. This type of issue, as you can see in the particular diagram here, like you are using a Firefox web browser. Okay, due to any reason, you can think any reason, your system off, due to network or any type of error, your browser is closed. Okay, so after close, जब browser आपका close हो जाता है, then when you are again opening it, then this type of window may be appear. If you are using Google Chrome, then this type of window may be appear. What is representing here? Restore previous session. In Google Chrome, this is the tab for Google Chrome, and this is for Firefox. Okay, in both cases there is some type of information like restore previous session or start new session. It means that is the property of the browser. That's why I am saying that the session layer lies on the coding of the session layer with the applications only. Okay, so here we can say when we are using session restoration, that means browser have the some type of power, so that if it closed by any reason, okay, improperly closed, then our next time when you are going to open it, it stores all the details. Like अगर आपके पास मल्टीपल टैब ओपन हुए, लाइक 10 टैब ओपन किए हुए हैं आपने, और बाय मिस्टेक आपने ऊपर राइट साइड में या कहीं पर आपके क्रॉस बटन प्रेस हो गई, सो अगेन अगर प्रीवियस वर्जन ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यू यूजिंग प्रीवियस वर्जन ब्राउज़र, देन you have to provide all the details for opening each and every tab. But in current situation,
you have to, there is some option like restore previous session, and when you click the restore previous session button, it automatically opens all the tabs that you have opened before. Okay, जो भी क्लोज करने से पहले जितने टैब आपके ओपन हुए होंगे वो सारे टैब ओपन होके आ जाते हैं। इसका मतलब कि कहीं पर ये डिटेल स्टोर होती रहती है, जिससे ब्राउज़र को ये पता रहता है कि कौन सा टैब या किस पेज को हमें ओपन रखना है। ओके, there is another example also, if your system haven't any type of download manager, किसी भी तरह का डाउनलोड मैनेजर आपके सिस्टम में ना हो। ओके, एंड लाइक 1 GB का कोई डॉक्यूमेंट, कोई डेटा, मे बी मूवी आप डाउनलोड कर रहे हैं, नेटवर्क नहीं है, डेटा पैक ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से आपको डाउनलोडिंग आपको बीच में ही स्टॉप करनी पड़ गई। ओके, नेक्स्ट डे जब नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन करते हैं, नेक्स्ट टाइम डाउनलोडिंग के लिए जाते हैं, तो क्या होता है, डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट होती है शुरू से ही। ओके, या से 700 MB डाउनलोड हो चुका है, आफ्टर दैट जो डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी 700 MB के बाद स्टार्ट होती है। यू हैव टू डाउनलोड 1 GB डेटा। ओके, सो इफ़ यू हैव अ डाउनलोड मैनेजर टाइप ऑफ एप्लीकेशन, then you can stop the downloading and resume it when you required, when you want to restart the downloading. Okay, so this is a type of say line is indicating a downloading condition, and you have say 1 GB data that you want to download. Okay, and the particular application or download manager have some type of checkpoints. Say after each and every 100 MB it going to store the details. Okay, like 100 MB के बाद एक चेक पॉइंट बना लिया है, say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, these are some checking point. अगर 100 MB हो गया तो यहाँ तक प्रोग्रेस होगा, अगेन 100 MB, देन यहाँ तक, इस टाइप से हुआ। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि किसी एक पॉइंट पे से इस पॉइंट पे हमारा कनेक्शन ब्रेक हो गया, डाउनलोडिंग हम स्टॉप कर देते हैं या किसी वजह से डाउनलोडिंग बंद करनी पड़ गई हमें। नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो बिकॉज जो नियरेस्ट चेक पॉइंट था जहाँ तक डाउनलोड हो चुका है ये पॉइंट है, तो नेक्स्ट जो डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे बढ़ेगा। ओके, इससे बेनिफिट क्या हुआ, आपका टाइम सेव हुआ, आपका डेटा सेव हुआ। इट मीन्स यहाँ तक का डेटा स्टोर करके आपके सिस्टम पर रखा हुआ है, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेशन रिस्टोरेशन। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डायलॉग कंट्रोल। क्या है ये डायलॉग कंट्रोल? कई बार एक ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आप वाइट बोर्ड का यूज़ करते हैं। वाइट बोर्ड में एक फैसिलिटी हमारे पास है कि जब आपको बोलना रहता है, लाइक हाफ डुप्लेक्स मोड में है, कि अगर एक टाइप का टोकन पर्सन के पास होगा, जिसके पास टोकन होगा वो कम्युनिकेशन करेगा। इट मीन्स वो अपना डेटा ट्रांसफ़र करेगा, जिसके पास नहीं होगा वो वेट करेगा, या कह सकते हैं वो केवल लिसनिंग मोड में रहेगा। ओके, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायलॉग कंट्रोल। इन डायलॉग कंट्रोल वी आर गोइंग टू set the amount of data to be sent and which device communicate first. Okay, this type of situation can be, you can also say that in case of webinar, that means live conferences. If you are if you have a opportunity to listen a webinar, then one speaker say something and other persons are listening only. Okay, when other have the chance to say something, then they are again start communicating. Okay, next one is synchronization.
Dialog control is also called as a flow control. That means it controls the flow of the communication. Okay. Next one is synchronization. That is the very important. Like अगर आपने कोई वीडियो देखा हो, डब वीडियो हो या कुछ इस टाइप से, कि नॉर्मली क्या होता है कि जब आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, सो जिस टाइम पर आप अनाउंस कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उसी टाइम पर वीडियो में भी वो मूवमेंट होना चाहिए. लाइक हम टाइप कर रहे हैं, अभी स्लाइड में ही हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं. लाइक नेक्स्ट वन इज सिंक्रोनाइजेशन. इस जगह पर हमने आप एक टेक्स्ट बोलते हैं कि हमने कहा मैंने लिखा है ए. इतना करने के बाद मैं यहाँ पर ए लिख रहा हूँ. ओके. या यहाँ पर हमने इसके बाद लिखा बी और तब आपके पास हमारी आवाज़ ए के लिए पहुँचे. सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन क्रिएट्स सब प्रॉब्लम्स. ओके. सो वो मज़ा नहीं आता ना क्लास में ना वीडियो देखने में, कि ऑडियो बाद में आ रही वीडियो पहले आ जाए, या वीडियो बाद में आए ऑडियो पहले आ जाए, तो वो प्रॉब्लम होती है, या कह सकते हैं इसे डेटा एक्यूरेट नहीं आता. सो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेशन लेयर टू सिंक्रोनाइज. ओके. सो दीज आर some basic responsibility of the session layer. So first one is authentication, authorization, session restoration, dialog control and synchronization. Thank you very much.